We are going to study the different types of friction today. These types are static friction, sliding friction, and rolling friction. When an object is stationary, it is not moving, it is at rest, then the static friction comes into play. When the object starts moving on a surface, there is motion of the object, then the friction is sliding friction, which is also called as kinetic friction. And when the object is rolling on a surface, then it has rolling friction. Let us define the static friction first. Static friction is a self-adjusting force of friction that exists between a stationary object and the surface on which it is kept. That means when the object is stationary, then the force of friction that comes into play between the object, stationary object, and the surface is known as static friction. See the example here. This object is lying stationary on the surface. Some force is being applied on the object, but the object is not moving. When the object is not moving, that means at this point of time, the frictional force acting here is static friction. In this example also, the man is trying to push this box, but still the box is at rest. That means the force that is applied by the man on this box is insufficient. The static friction that is there between the box and the surface on which it is moving, that is more. There is friction between the box and the surface, that is static friction, and this static friction is more as compared to the force that is being applied by the man. Next is the sliding friction. Read the definition here. The friction that acts between an object and the surface when the object is sliding over the surface. दैट मीन्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो एक्ट करता है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस के ऊपर मूव करने लगता है, तब वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लग रहा है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है. सी द एग्जाम्पल हियर. अ साइक्लिस्ट इज मूविंग. दैट मीन्स साइकिल के टायर्स और सरफेस के बीच में कौन सा फ्रिक्शन है? वो फ्रिक्शन है sliding friction. Similarly here, the children are sliding on the surface. Slide कर रहे हैं, जैसे आइस पर स्केटिंग करते हैं, वो स्लाइडिंग हो रही है. इस स्लाइडिंग का मतलब यहाँ पर क्या है? ये स्लाइड कर रहे हैं इस डायरेक्शन में और फोर्स लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इस फोर्स को हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे. सी दिस एग्जाम्पल. ये स्लाइडर्स पे बच्चों ने व्हेन यू वर यंग, छोटे से बच्चे थे तब स्लाइडर पे मूव करते थे, ऊपर से नीचे जब आते थे तो क्या है, ऊपर स्टेशनरी हो और जैसे ही नीचे मूव करते हो तो यू आर कमिंग डाउन इन दिस डायरेक्शन एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन.